Hi, everybody. We're back with another episode of your favorite show, Red, White, and Brown from Life. And today, we just got two of us. The other two, one's sick, one's traveling, and we're missing them. But here we are, Manushi and me, and we're going to talk about the three series. Well, actually, one series and no, actually, two series and one movie, right? We're going to talk about a movie called Mrs. Undercover which streams on Z5 Global. If you don't have the app, get the app, Z5 Global. But before you get the app, let's tell you about the movie in a bit. Manushi will. But then we also review a limited series called Obsession that's streaming on Netflix. Okay, I wait. Netflix is being mischievous. Netflix, this might be the kinkiest content on Netflix so far. All right. So we're talking about Obsession, and why we're covering it is because there are so many desis in it. So yep. They're there. The land of Kama Sutra just happened on Netflix, and and we will also review Jeremy Renner's Renovations, which is a show about Jeremy Renner, his personality, and the fact that he renovates cars to donate them. But we're going to talk more all about that in a bit because we're going to get started with reviewing our first movie for today's show, and that is Mrs. Undercover, Radhika Apte'S Mrs. Undercover. Manu, what do you think? Hi everyone, and I'm going to tell you a lot of things about Mrs. Undercover because probably they have a lot of things to talk about. And the movie is only all about talking, and talking because the movie happens with all the conversations and it ends with all the conversations. There's no plot in the movie, if I can say that very literally, because I mean, I understand that, we women are really obsessed with women. We love the word feminism so much that we chase it blindly. मतलब आजकल लोगों को फेमिनिज्म का शायद मतलब ही नहीं समझ में आता. For some people, feminism is all about women empowerment. For some people, feminism is all about कि कैसे gender tag का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए. And for some people, it's just bullshit. And this movie is a mix of all. अगर मैं इसे बताना चाहूँ तो क्योंकि फेमिनिज्म तो झाड़ झाड़ के दिखाई इसमें, हर सीन में घुसा दिया है कि औरतें महान होती है. अरे भाई, औरतें महान होती हैं, क्या महान होती हैं? औरतें को औरतें इंसान होती है ना, उनको इंसान रखो. बार बार एवरी नेक्स्ट सीन हैज दिस डायलॉग कि हाउसवाइफ किसी सुपर वुमन से कम नहीं होती. अरे यार, एक आई एम डन विद दीज माइथोलॉजिकल एंड दीज सुपरफिशियल कंपैरिजन. आई डोंट अंडरस्टैंड कि हर किसी मूवी में कहाँ से ये गॉड के साथ रिलेटेबिलिटी या फिर कैसे ये कोई सुपर वुमन या बैटमैन या पता नहीं किसके साथ रिलेटेबिलिटी दिखा देते हैं. अरे यार, औरत है वो. आई अंडरस्टैंड हाउसवाइफ डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट इन दिस वर्ल्ड विथ नो undue interest in that, but apart from this, मतलब seriously, no offense, but हाउसवाइफ अगर पूरी मूवी में हाउसवाइफ पे ही दिखाना था तो प्लॉट को कुछ और रखते ना. अगर इसको बेचना था थ्रिलर मूवी की तरह और फिर दिखाना था कॉमेडी with a lot of dialogues and dialogues, तो क्या पॉइंट था इसका? मतलब I saw the trailer and I was so intrigued. I was like, oh my god, yes, this psycho killer is really so good, and Sumit Vyas is portraying the role of this common man जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है. And apparently the plot revolves around Radhika Apte, and she is a Bengali woman, and उसकी शादी हो गई होती है. And after 10 years उसने छोड़ दिया होता है special force, and after 10 years she's been called back for this case क्योंकि कॉमन मैन कॉमन मैन का एक ट्रेट है कि वो सारी बिजनेस वुमेन्स एंड सक्सेसफुल औरतों को टारगेट करता है एंड औरतों को चेस करता है जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सोचते हैं, who want to contribute to the society and do well for women, blah blah blah, women welfare related सब औरतें उसकी टारगेट और हिट लिस्ट में होती हैं. And believe me, when the movie started, I was like, oh my god, this is going to be one hell of a creepy movie. But उसके बाद it turned out to be a comedy circus. शायद मैं इसका नाम दे सकती हूँ
कॉमेडी नाइट्स विद मिसेस अंडरकवर, क्योंकि शायद इस मूवी का पर्पस ही ये था कि कॉमेडी कॉमेडी दिखाए. एंड राधिका आप्टे, What was it? But was it supposed to be a comedy? मैंने मैंने रिव्यू के टाइटल में लिखा था मीरा कि नॉट सो स्पाई थ्रिलर मिसेस अंडरकवर, बिकॉज आई थिंक इसको मार्केट किया गया था लाइक अ स्पाई थ्रिलर, बट ये स्पाई थ्रिलर जैसा तो कुछ भी नहीं था. आई मीन इट वाज नॉट इवन क्लोज टू स्पाई थ्रिलर, इफ आई कैन से दैट वेरी लिटरली. एंड इतना घटिया एंडिंग, मतलब I expected better. I expected at least थोड़ा ऐसे वेल डिजर्व्ड एंडिंग मिलना चाहिए था उस साइको किलर को, बट नहीं. उसका तो मतलब एंडिंग का तो कचरा ही कर दिया, खैर छोड़ो. बट उसके अलावा राधिका आप्टे को आई अंडरस्टैंड के हाउस वाइफ हमेशा साड़ी पहनती हैं, द टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देम इन द सोसाइटी. बट How वो साड़ी stereotypical. कौन सी हाउसवाइफ साड़ी पहन के घूमती है? अर्बन हाउसवाइफ कौन सी साड़ी पहन के घूमती है? या इवन मंगलसूत्र और come on. Why do you want to depict a woman in a sari? मतलब हाउसवाइफ दिखाना है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीधा साड़ी से हो गया, क्यों? This Why? is what I don't get. Even in Hindi serials, the moment लड़की की शादी हो जाती है साड़ी में आ जाती है. क्यों यार? कपड़े का क्या लेना देना मैरिटल स्टेटस से? समझ ही नहीं आता मुझे. जिस दिन समझ में आ जाएगा ना मीरा, मुझे और तुम्हें, कि साड़ी का क्या कनेक्शन है शादी से, उस दिन वी नहीं विल नहीं, साड़ी का कनेक्शन शादी से है. साड़ी का कनेक्शन एक सुधरी हुई सिंपल औरत से है. संस्कारी लड़की साड़ी पहनती है और या सलवार कमीज पहनती है. वो सर्वगुण संपन्न बहुएं होती है ना, कि नहीं माँ जी नहीं, मैं आपके चरण धो के पी जाऊंगी टाइप. गया वो जमाना मैन. व्हाई इज अ वुमन एसोसिएटेड विथ साड़ीज एंड ड्रेसेस एंड चनिया चोलीज एंड व्हाटएवर? अरे यार, औरतों का आइडेंटिटी उनके कपड़े नहीं होता है, उनका काम होता है, उनका उनका स्किल सेट होता है, उनका नेचर होता है, उनका बिहेवियर होता है. बट नहीं, हम तो अभी भी घूम फिर के Tell me one thing, Manushi. इसी बात पे I wanted to ask you because you're in India and small towns में, not the bigger towns of course, but smaller cities and maybe लड़कियां क्या सलवार कमीज वगैरह पहनती हैं आजकल शादी के बाद? साड़ियां पहनती? साड़ियाँ तो साड़ी तो इनफैक्ट इफ आई कैन से दैट, मेरी खुद की दादी, शी नेवर वेयर्स अ साड़ी. माय मॉम डजंट वेयर अ साड़ी बिकॉज दे डू नॉट लाइक वेयरिंग अ साड़ी. एंड मेरी दादी अगर ड्रेस पहन के घूमती है तो इट्स जस्ट अबाउट मॉडर्निज्म, you just have to cultivate that within you. And ऐसा होता है, चलो लोगों को पसंद आता है पहनना तो शौक से पहने ना, बट ये क्या इसके पीछे नॉर्म और लॉजिक है? Stereotypical, this stereotype to the extent कि they can really shake it off. Okay, get it. पोस्टर आया था ना, तभी भी मैंने देखा था कि ये एंड इसके ट्रेलर में भी साड़ी में था. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर इतने 2023 के टाइम पर मूवी है तो यू कैन एटलीस्ट शो कि वो कैसे एक हाउसवाइफ की तरह सारा रोल मैनेज करती है. पर साड़ी में, एंड शी इज अ टिपिकल हाउसवाइफ जो अपने हस्बैंड की जी हुजूरी करती है, कि उसके हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती है एंड ऑल दैट क्रैप, which is so bad to watch in this time, because अभी nobody wants to be that अबला नारी जो अपने हस्बैंड के इशारों पे नाचती है. एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द फैक्ट कि इस मूवी में एक ग्रैंड मदर का जो रोल जिन्होंने किया है, शी इज सो मॉडर्न. वो अपने बेटे को बोलती है कि तुम्हें अपनी वाइफ को परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम्हें अपनी वाइफ को परमिशन नहीं देनी चाहिए, वो अपनी मर्जी की मालकिन है, जैसे वो चाहे उठ सकती है, बैठ सकती है, तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है. एंड दिस इज द रियलिटी कि वी वुमेन डू नॉट वांट परमिशन फॉर एनीथिंग. आई मीन व्हाई वुड वी वांट टू सीक परमिशन फॉर एवरीथिंग? एंड राधिका आप्टे का जो रोल है, शी इज डन अ वेरी गुड जॉब. नॉट टू क्रिटिसाइज हर एक्टिंग और समथिंग, शी इज डन अ वेरी ब्रिलियंट जॉब. बट एट द सेम टाइम इसमें एक्शन सीन्स का मजाक बना दिया है. लाइक when you actually chase a psycho murderer, so you're expected to have a certain body language, a certain way in which an action मैंने ये उसमें भी नोटिस किया था, पठान में भी, जो दीपिका पादुकोण के
action sequences. She was heavy in those action sequences. It wasn't as if she was really kicking somebody. वैसे नहीं होता. वो agility नहीं थी उसमें. And I guess it's the same. I think women need to get trained better to perform action scenes because they can't seem heavy on their feet. एंड उसमें भी इसमें तो कैसा पता है कि गर्दन पे एक ऐसा करते हो उसकी गर्दन ऐसी जो आई मीन ब्रो ऐसा नहीं होता है एक्शन सीक्वेंसेस ऐसे नहीं होते आई मीन आई रियली वांट हिंदी फिल्म्स टू पिक अप दिस कि एक औरत एक्शन सीन करती है बहुत पावरफुल लगती है ऐसा हमको लगता है बट अगर उस एक्शन सीक्वेंस की डिलीवरी भी उतनी अच्छी हो और एग्जीक्यूशन भी उतना ही अच्छा हो तो देखने में भी मजा आएगा सामने वाले को हंसी तो नहीं आएगी कम से कम and I swear I was laughing at this action sequence and there are like she's tasing that murderer and उसके पीछे ऐसे 4-5 लोग हैं जो उसको ऐसे क्राउड करके बैठे हुए हैं and she's doing this that and ऐसे ऐसे करके बेलन वेलन से she's practicing inside the house. I was like what have I seen? And the storyline had a very good potential, honestly, because when I saw the trailer, it clicked to me that, this is going to be a nice movie where a housewife is going to be an undercover agent. But no, they had to show housewife in the typical role, and that is my only problem. But why do you want to show it like that? And Sumit Vyas का potential waste कर दिया इतना अच्छा performance दिया था बंदे ने अगर supporting storyline होती so this movie would have done wonders. In fact, इसका part 2 भी आ रहा है because last में they have this thing where they show कि coming soon. So definitely अगर इसका season 2, I mean sorry, not season 2, part 2 आ रहा है तो makers please इसको spy comedy मत बनाइए. Make it a spy thriller जो actually में thrilling लगे. मतलब I really wanted to watch a good thriller film. But this is not even thriller. Why can't they make good movies with women? Why do women have to be reduced to a caricature instead of a serious spy? I don't know, but here we go. Exactly. And if she had to be shown like a spy, तो उसके attributes, उसका behavior, उसका characterization भी तो वैसा होना चाहिए ना. This is like ये तो बिल्कुल वो गुलाम है उसके पति की and she's just obeying everything and वो छुप छुप के mission पे जा रही है and all this. I mean what? Why? क्यों छुपना पड़ेगा अपने husband से? And ये क्या? What is this नॉनसेंस के हस्बैंड से छुप के करना पड़ता है एंड परमिशन लेनी पड़ती है एंड अगर 2023 का मूवी लिख रहे हो तो 1970s मुगले आजम के जमाने की अनारकलियों को तो मत दिखाओ यार आई मीन एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं हम लोग इतना तो वी कैन एक्सपेक्ट राइट Anyways, having said that, this was Mrs. Undercover. It is on Z5 Global. And if you have a chance and you have the app, feel free to watch it. But